My dear students, how are you? Welcome to this session. My name is Juhi Narula, and in this video, we are going to talk about argument-based essays. So, of late, there's been a new trend where students are provided with a small paragraph, and you have to analyze that particular paragraph and craft an essay. This sort of essay writing is frequently seen in GMAT and GRE. So we have to be very, very attentive and we have to learn because this is slightly unconventional and most of us have never attempted such sort of essays before, right? So in this video, we are going to talk about in detail how to handle such essays and I'll give you a basic template and we'll discuss the do's and don'ts on the same. So let's get started. So you have to, like I said, you have to assess the information that is provided. So that will be a small paragraph that will essentially comprise of a claim or a conclusion the author is trying to establish. And in order to establish that claim or conclusion, the author will present evidence or premise as the supporting statements. Like I go to my boss and I say, सर आई नीड अ सैलरी इंक्रीमेंट. सो वो मुझे कहते हैं कि जूही आप एक काम करिए, आप एक ऐसे लिख के दीजिए या एक ऐसे तो नहीं कहेंगे पर ऐसा कहेंगे कि मुझे एक मेल लिख कर दीजिए जिसमें आप पॉइंटर्स लिख दीजिए कि आपका क्या अचीवमेंट्स थे एंड देन आई विल डिसाइड. सो the idea, the claim that I'm trying to establish when I present that particular paper would be to justify this concept that I deserve it. So I'll give the results of my students, I'll tell the pass percentage, I'll say my I'll say the contributions I've made towards the firm. So those points will help me validate the claim, right? So this is very important. So for you to understand, now it is up to my boss. If he finds that whatever evidences or supporting statements I've made are convincing enough, then he might give me the hike that I've asked for. Or if he sees that there's some work that has to be yet done, then there might be some negotiation. तो ये जजमेंट किसका है? ये मेरे बॉस का है. आपका जजमेंट यहाँ पर होगा जब आपको पैराग्राफ दिया है कि जो क्लेम ऑथर रीच करना चाह रहा है, क्या जो एविडेंसेस ऑफर्ड है वो सफिशिएंट है, वो रीजनेबल है उन क्लेम्स को जस्टिफाई करने के लिए. तो ये एनालिसिस आपको करना है व्हाइल यू आर रीडिंग द आर्ग्यूमेंट दैट इज ऑफर्ड. सो इसलिए हमको इसको आर्ग्यूमेंट बेस्ड जैसे कहते हैं. सो आर्ग्यूमेंट इज प्रोवाइडेड. इसी जो क्लेम और एविडेंस का कॉम्बिनेशन है इसको हम टेक्निकल टर्म्स में आर्ग्यूमेंट कहते हैं. सो एट टाइम्स स्टूडेंट्स आल्सो गेट कंफ्यूज्ड कि व्हाट इज दिस न्यू थिंग दैट हैज कम इन essay writing which has got a name called argument. So there's nothing but a small paragraph offered. So your understanding of that argument has to be very strong. You should be able to comprehend that information. Then only you'll be able to evaluate and write it. So making a vocal judgment is very easy, but when it comes to pen and paper, you have to be very sharp and smart in order to do so, right? So like I was trying to explain that usually the student is offered with certain conclusion which the author is trying to elaborate, illustrate, validate, qualify, right? So it will also have a premise on the basis of which the author is deriving at the conclusion, and at times there would be assumption. So what is an assumption? That something which goes unsaid and you have to think on your own it to be correct, right? So that will not have any justification or support, that goes unsaid, right? So I'll give you 1 minute. Please read to these 4 bullet points so that you are able to relate what I just explained it to you. Let's further proceed. I'm sure you've read it.
So what would be your role? Like I previously explained, that you should be prudent, wise enough to analyze it, right? So you should identify that this is the conclusion, this is the evidence, and for this your understanding of critical reasoning has to be strong, right? So please focus on this aspect also. We have some videos for critical reasoning, right? So you'll find it in this playlist itself. So try and explore that. Dissecting means breaking the argument into components, understanding that this is the claim. First you have to identify that this is the claim, then this is the evidence. You need to see, acha, this is the underlying assumption. Is there any area that's problematic, or is it good? Your understanding of the argument is the primary backbone of creating an essay. If your understanding is not proper, you will not be able to write it well, despite being uh, uh, despite having great writing skill set, right? So also see that what are the flaws. Now the acting students question कि मैम flaws क्यों ढूंढने हैं? जब assessment होता है perfect भी हो सकती है, argument हो सकती है, but what will happen is that the argument that will be offered to you will be very very small, right? It will just have 3 to 4 statements. So on the basis of 4 statements, you cannot write an essay of 300 words saying that everything is going great and it is smoothable. The argument will only, I mean, you will be only able to write an elaborate essay if you are able to look at the points which are not present, because there will be a lot of points there, right? So look for the flaws. Flaws means what the author has missed while he or she was trying to reach to the conclusion, right? So once you're able to deduce the flaws, then you will be able to sail through the essay easily, right? There can be 2 ways. One, you say that the argument is perfect, बहुत बढ़िया लिखा है, I am satisfied, वो भी आप कर सकते हो, पर again the point is क्योंकि एक ही एविडेंस या 2 एविडेंस स्टेटमेंट्स होते हैं, उसको आप 300 वर्ड्स में नहीं खींच सकते, इसलिए आप 3 4 6 ऐसे पॉइंट ढूंढ लेते हो जिसके बारे में ऑथर ने बात नहीं की होती, एंड ऐसे पॉइंट्स विल बी देयर। जो पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया वो एक फ्लॉ है आर्ग्यूमेंट का, यानी कि इसको कंसिडर नहीं किया ऑथर ने आर्ग्यूमेंट को स्टैब्लिश करने पर, तो वो आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान होगा, ज्यादा फ्लॉज आइडेंटिफाई कर पाओगे, ज्यादा पॉइंट्स होंगे, इसके लिए जो आपके ऐसे को लेंथ मिलेगी विदाउट रेपिटेशन अच्छी मिलेगी, राइट? सो दिस इज द रीजन आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि आर्ग्यूमेंट बेसिस में टॉक अबाउट दैट द आर्ग्यूमेंट इज इनकम्प्लीट एंड इनइफेक्टिव एंड देयर आर लॉट ऑफ फ्लॉज लाइक व्हाई, बिकॉज देन you can build on the entire essay, otherwise you will not have a lot of points to write while creating the essay, right? So present a logical critique by saying that the opinion is not up to the mark, or you can, also include your own expressions, right? So read these 3 bullet points and then we take the discussion ahead. Further proceed. Now, it's very important to understand the structure. Now, another point that I would want to add here, that when we talk about any creative work, be it essay writing, making a song, writing a poetry, creating a musical piece, directing a film, there is no only, मतलब ऐसा कहीं भी नहीं है कि सिर्फ इसी तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो, क्रिएटिव काम है, आप कैसे भी कर सकते हो। My idea to provide you a template is that this is the safe way, and at times students struggle to find that what is the right way, right? So you have to work very very hard to find the right way, which
which can only happen when you're practicing 10 to 20 essays, getting checked by some expert, and imbibing the feedbacks given for improvement in each and every type. Otherwise, if you want to avoid that hassle, this is the structure that my students have followed and they've found great success. Right, so it's again up to you. You can, tweak the structure, you can play on your own, you can have entirely your own method to create an essay. But if you're doing something entirely on your own, ensure that by you get your essay checked by an expert nearby. That will help you understand that is it good enough, reasonable enough to be written in the exam, the concept or the structure or the idea that you would want to have in your essay. In case you do not have that help around, please look for somebody. Otherwise, it's better to stick to a structure because that's pretty safe, right? So you'll be safe. You are not going to, get less marks if you're using this. Again, the call is yours. I'm again reinstating. I've given you the reasoning, so you can decide accordingly. Now, it is very important for any essay that you write should have at least 5 paragraphs. Less than 5 paragraphs show that you do not have adequate ideas. So that is counted in a negative way. More than 5 paragraphs, people are not interested. So if you ask me that what should be the number of paragraphs that are optimum enough, then my suggestion would be that 5 are sufficient. Okay, you can move towards 6 if you have real good points, but please ensure that your points are not getting repetitive. At times students want to detail and elaborate more, but in that case what happens is that the points become repetitive, which is utter waste of time, of your time and of the time of the grader. So if the grader, of course, he would be or she would be able to sense that you're repeating the points. That's something that is very easily noticeable. Even if you try to use a different language, different words, presenting it in a different way, packaging it in a different way, graders have great expertise. Those are trained people. They know the ins and outs of the games. They have evaluated hundreds and hundreds of essays before. So for God's sake, please don't undermine their intelligence or prudence, right? So आपको लगता है कि आप उनको बेवकूफ बना सकते हो, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते. So don't even try to attempt this, right? So coming to the structure, the first paragraph will be the introduction one. Introduction क्या होता है? जहां पर आप introduce करते हो कि अच्छा, जो मैंने argument पढ़ी उसमें author का perspective ये था, ये claim establish करना चाहता था, और इस claim को establish करने के लिए उसने ये evidence present करे. ये ध्यान रखिएगा कि आप ये जो आइडियोलॉजी प्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट ही कर रहे हो, यहाँ पे आप कुछ नया नहीं कर रहे हो. यू आर जस्ट यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफर्ड इन द आर्ग्यूमेंट और इन द पैराग्राफ दैट वाज ऑफर्ड टू यू. So please ensure that you are using your own language. This is very very important. Students क्या करते हैं, author has given the conclusion, पूरा conclusion का statement as it is उठा के paste कर देते हैं. इसको paraphrasing नहीं बोलते. इसको अपनी लैंग्वेज खुद की यूज करना नहीं बोलते. मतलब एंटायरली नए सेट ऑफ वर्ड्स में ऑथर का दिया हुआ कंक्लूजन और प्रेमाइस लिखिए, राइट? अब यहाँ पर अपना स्टैंड क्लियर कर लीजिए. आप बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफर्ड द कंक्लूजन इज नॉट स्ट्रांगली ग्राउंडेड एंड नीड्स द आर्ग्यूमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स और हैज सर्टेन लूप होल्स, राइट? तो जो आपका कंक्लूसिव रिमार्क है वहीं पे एस्टैब्लिश कर दीजिए. फॉर डूइंग दिस यू आर गिविंग क्लैरिटी टू द ग्रेडर एज टू हाउ द एसे इज गोइंग टू प्रोसीड. And nobody likes uncertainty. Nobody is there to solve the puzzles, right? कि अच्छा ये स्टूडेंट किधर की तरफ डिस्कशन को लेके जाना चाहते हैं. अगर कहीं आपको लगता है कि आपका स्टैंड पॉजिटिव है, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं और आप कह सकते हो कि आर्ग्यूमेंट इफेक्टिवली एस्टैब्लिश्ड है, आप उस डायरेक्शन में भी पॉइंट को लेकर जा सकते हो. पर जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था कि यूजुअली हमारे पास आर्ग्यूमेंट बहुत छोटे होते हैं, तो सफिशिएंट एविडेंसेस प्रेजेंटेड नहीं होते, तो आर्ग्यूमेंट में मटेरियल कम रह जाता है अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हो. पॉजिटिव डायरेक्शन से मेरा कहने का मतलब है कि आप ये कहो कि आर्ग्यूमेंट वेल रिटन है, राइट? आप क्वेश्चन करोगे तो आपके पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे, आप ज्यादा इलाबोरेट कर सकते हो, ज्यादा एक्सप्लेनेशन ऑफर कर सकते हो, ज्यादा रीजनिंग प्रेजेंट कर सकते हो, राइट? सो आई एम श्योर वी आर क्लियर. इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक तो दिस इज वेरी अनकन्वेंशनल एंड मोस्ट ऑफ अस विल बी डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो यू नीड टू हैव ग्रेट नोट्स फॉर इट. सो प्लीज राइट दिस डाउन और रीड इट वेरी नाइसली एंड यू कैन क्रिएट योर ओन बुलेट्स. आई गिव यू 1 entire minute to do the same.
I'm sure you've written the points and you've absorbed the concepts. It's time to proceed further. Now come to the body paragraphs. So like I said, 3 body paragraphs are good enough. Less than 3, not optimum. More than 3 becomes repetitive. But if you still find some solid points and you feel you can do justice to one additional body paragraph, go ahead, right? So now what do we do in the body paragraph? Let me explain. So when we are brainstorming, so first is how do you utilize your time? So let me just slightly deviate from the discussion and give you an insight that you, if you assume that you have 30 minutes, you will invest initial 2 to 3 minutes to read and understand the argument, right? This is very important. समझ लो कि क्या चल रहा है. उसके बाद नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स आप आसानी से दे सकते हो टू आइडेंटिफाई द फ्लॉज. another 2 to 3 minutes can be done to plan, right? तो ये सारा आप इनिशियली 6 to 8 मिनट्स का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो टू जस्ट अब्सॉर्ब द इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई कि क्या फ्लॉज है, क्या क्या रीजनिंग मिसिंग है इस आर्ग्यूमेंट में, और आप अपने एसे में उसको कैसे इन्वॉल्व करोगे. जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है उसको पहले बॉडी पैराग्राफ में रखो, जो आपको उससे कम स्ट्रॉन्ग लगता है उसको नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में, जो आपको लगता है रिलेटिवली सबसे कमजोर पॉइंट है उसको लास्ट बॉडी पैराग्राफ में पुश कर दो, राइट? सो अब वही पैराग्राफ लाइक ऐसे जिसको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, इलैबोरेट कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, दैट पॉइंट शुड बी पिच्ड इन फर्स्ट, right? So you have presented the point. Now explanation should be offered that why do you think like this, that suppose there's a conclusion drawn that जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो हेल्दी रहते हैं. सपोज करिए ये कंक्लूजन और प्रेमाइज आपकी आर्गुमेंट का हिस्सा है, तो आप इसमें ये पॉइंट कर सकते हो कि किस एक्सटेंट पे प्रैक्टिस करनी है, किस रेगुलरिटी पे प्रैक्टिस करनी है, प्रोफेशनली प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी, क्या उनका एज ग्रुप क्या है, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, राइट? वो जंक तो नहीं लेते. ये सारे पॉइंट्स तो ऑथर ने बोले ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो उनको हेल्दी रहेंगे, राइट? तो इनमें कोई भी एक फ्लॉ जो आपको लगता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपको लगता है कि ये सबसे इफेक्टिवली इलेबोरेट किया जा सकता है, जस्टिफाई किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, स्ट्रांगली कन्विंस कर सकते हो आप अपने ग्रेडर को उस पॉइंट पे, उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करो. एक्सप्लेनेशन हमेशा होना चाहिए. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ पॉइंट आउट कर देते हैं ये फ्लॉ है, अच्छी बात है, आपकी फ्लॉ स्ट्रांग है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत बढ़िया, पर अगर आपने उसको इलैबोरेट नहीं किया तो दैट्स वेयर वी आर लीविंग द गैप. कई बार हमें लगता है कि तो बड़ा ऑब्वियस सा बात है ना, लोग समझ जाएंगे, बट आपका काम तो एक्सप्लेनेशन ऑफर करना ही है. देयर कैन बी 3-4 पॉइंट्स. जैसे मैं आपको एक पॉइंट दे दूं और मैं कहूँ तो ऑब्वियस है, स्टूडेंट समझ जाएगा, बट स्टिल आप देखोगे कि जो भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या ट्रेनर्स होते हैं या एजुकेटर्स होते हैं, वो हमेशा बिलीव करते हैं कि ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड हो, और इसमें अगर कुछ लाइंस एक्स्ट्रा इन्फर कर दी जाए, दैट माइट बी साउंड रेपिटेटिव, बट if that brings in more conviction to the reasoning, then that's a good thing, right? तो इसको elaborate करिए. elaborate करने का मतलब उसको आसानी से समझ जाओ, इतना उसको explain कर दो, right? अब आपने एक फ्लॉ आइडेंटिफाई कर दिया, राइट? आपने कहा कि ये वाली प्रॉब्लम थी, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई कि भाई आप क्या करोगे जिस प्रॉब्लम को ओवरकम कर दो. तो आप इस प्रॉब्लम को ओवर, जैसे आपने कहा कि भाई एक आपने कहा जो लोग एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं वो हेल्दी रहते हैं. अब इसमें कहा कि अगर ऑथर इसमें आपने कहा कि इसमें एज ग्रुप नहीं मेंशन करा, ये फ्लॉ है, किन लोगों पे स्टडी करी, ये फ्लॉ है, तो आपने कहा कि एज ग्रुप का पॉइंट इलैबोरेट करते तो आर्गुमेंट में रैशनैलिटी आती, ज्यादा इफेक्टिवनेस आती, क्योंकि हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एन एक्सरसाइज चाहिए, राइट? अब इसमें आप कह दो कि अगर ऑथर ने एज ग्रुप वाला फैक्टर कंसिडर किया होता और उस पॉइंट को इंक्लूड करके आर्गुमेंट क्रिएट की होती तो आर्गुमेंट इफेक्टिव हो जाती. बस इतना सा सोल्यूशन ऑफर करना है, और आपने एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया ग्रेडर को कि यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन, राइट? यू आपका फोकस प्रॉब्लम पे नहीं है, आपका फोकस सोल्यूशन पे भी है. तो दिस गिव्स अ वेरी, बिकॉज सी whoever is watching the video will be either going into management or taking some positions where it would be expected from you that you are able to solve the problems, you are able to help people offer solution. So that can only happen when you are demonstrating it. तो ये आपका एनालिटिकल स्किल सेट को भी टेस्ट कर रहा है, तो
एसेज और इंटरव्यूज बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं आपकी हिडन पर्सनालिटी ट्रेट्स को रिफ्लेक्ट करने में। तो हमेशा जब भी आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, एक सोल्यूशन इमीडिएटली पिच इन कर दो टू गिव दिस क्लैरिटी दैट यू आर not only looking at the problem, but you're also finding a way to solve it, right? Makes sense, isn't it? So you can just read it to absorb it better. And of course, it is always right to link it to the next paragraph. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चार अलग अलग पैराग्राफ्स हैं, ऐसे का मतलब ये कि कॉमन थ्रेड ऑफ आइडियाज फ्लो कर रहा है. So you should use a lot of transition words furthermore, moreover, in order to so that the ideas look linked and looks like that you are building a chain, right? So please read it well. I'll give you 1 minute. You can write some bullet points. Time division मैंने आपको कहा, planning का initially investment बता दिया, right? फिर 15 to 17 minutes में आप पूरा essay को लिख सकते हो. You can write it and do keep last के 2-3 minutes for revising and recapitulating, right? So that revision part के लिए या proof reading कह लीजिए, उसके लिए रखिए. 3 sections में time को divide करिए. Initial 6 to 8-10 minutes for your planning, reading the argument, looking for the flaws, everything. फिर आपने जो सोचा उसको execute करिए. Another 15 to 17 minutes. वो आसानी से और बड़ा क्विकली होगा अगर आपके पास आपका प्लान रेडी है तो. और लास्ट के 2-3 मिनट रिविजन के लिए जरूर रखिए, राइट? जस्ट रीड द पेज सो दैट यू आर सॉर्टेड एंड देन वी प्रोसीड फर्दर. Right? So I'm sure you have absorbed the idea. Now let's come to the third part. So of course with every body paragraph you need to do the same, right? Conclusion में इस पॉइंट को जरूर रीइंस्टेट करिए कि आर्ग्यूमेंट फ्लॉड है, राइट? इससे हमेशा आप ये क्लैरिटी देते हो कि you are having clear head and you know what you wanted to establish in the entire discussion, right? And in a quick way always give the points जिससे argument better हो सकती है. फिर problem solving ability को आप वापस focus में लाओगे. कंक्लूजन को बहुत ही क्विक रखो, ज्यादा इलाबोरेशन का किसी के पास टाइम नहीं, सबको पता है खत्म हो रही है स्टोरी. सो पीपल वुड वांटेड टू जस्ट ensure that you're giving a conclusion and you're recapitulating the points. Nobody wants to have a too detailed discussion here, right? So like I said, कभी भी last point में बहुत ज्यादा reasoning मत करिए. It clearly gives the impression, I personally strongly feel so, कि ये एक आपने दूसरा body paragraph create कर दिया और आपने essay को लिख दिया without having a conclusion in it, which is a sin, not appreciated, not at all considered formal, right? So I'm sure you've got the structure. Now let's understand कि कौन कौन से points check होते हैं जब आपकी essay writing होती है, right? Of course आप ideas कितने clarity से build करते हो, इसलिए I am again and again re-emphasizing on this point कि आप प्लानिंग जरूर करिए. अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो डिसऑर्गेनाइज्ड ऐसे लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं भी किधर से भी पॉइंट आ रहा है. तो वो रैशनैलिटी, वो क्लैरिटी तभी आएगी जब आपने एडिक्वेट होमवर्क कर लिया, मतलब आपने एक थॉट बिल्ड कर लिया, उस पर टाइम दिया, उस पर एनर्जी दी. आप कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, द मोमेंट दे स्टार्ट रीडिंग द आर्गुमेंट दे फील सो पम्प्ड अप, दे फील सो चार्ज्ड अप, दे हैव सो मेनी आइडियाज कमिंग, यू नो द स्ट्रक्चर, स्टार्ट राइटिंग. But what happens is that at times it looks like a Pandora box, chaotic लगता है, ऐसा लगता है बड़ा कहीं से कोई भी पॉइंट इमर्ज हो गया है, फ्लूइडिटी नहीं आती, कोहेसिवनेस नहीं आती. कोहेसिवनेस का मतलब आइडियाज लिंक्ड नहीं लगते, राइट? टूटा फूटा आर्ग्यूमेंट लगता है कि चलो कुछ भी कहीं से भी लिख के जोड़ तोड़ के एक ऐसे रख दिया. आपको लगता है यू हैव प्रेजेंटेड अ यूनिट, बट you know the moment the grader will open the notebook, it will just
bulge out. So that should not happen, right? So वो clarity of ideas तभी आएगी जब एक तो आप read करोगे, practice करोगे, and you'll put an adequate thought before you start performing the task of writing, right? Now presentation is important, right? So if you are writing hayward, कोई transitions appropriate नहीं करे या linking appropriate नहीं करी, तो boredom आता है या monotonous हो जाता है या आपके words appropriate नहीं है, तो वो आपकी clarity thought में हो सकती है, but वही clarity paper पे reflect करना important है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइज करिए, राइट? जो उससे वीक पॉइंट है उसको पहले रखिए. एज सिंपल एज दैट. मतलब ये बहुत लेमैन सा एग्जांपल है, बट इट स्टिल मेक्स सेंस. If you have seen this series Game of Thrones, so I'm sure everybody must have seen that how the last season was a big time disappointment, but the previous seasons were so engaging that everybody watched the last season, right? Why did it happen? Because previously आपके engagement को, आपके focus को, आपके attention को इतनी powerful था episodes, direction, performance, storyline कि आपको attract कर लिया, आपको grasp कर लिया, right? So this you have to see that that's what you are doing. Your strong points are coming right in the beginning. They are making an impression and they're engaging the grader or the audience, whoever is reading your point. If that engagement clicks in the beginning itself, then at times अगर बाद में कुछ weak point भी होता है तो भी वो बहुत easily overpower हो जाता है. Essays are important and that is the reason we are having elaborate discussion, because there is no gray and white. यू डूइंग एंटोनिम क्वेश्चन, आरसी क्वेश्चन, बी है आंसर, डी है. यहाँ आप ग्रेडर को चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई तूने 10 में से मुझे 4 मार्क्स क्यों दिए, मेरे फ्रेंड को 6 क्यों दिए या उसको 7 क्यों दिए. उसका इंस्टिंक्ट है, उसका पर्सपेक्टिव, एंड दिस विल वेरी फ्रॉम ग्रेडर टू ग्रेडर, राइट? एवरी पर्सन हैज गॉट ओन आइडियोलॉजी. मे बी यंग टर्क्स, जो यंग ग्रेडर्स हैं, दे माइट बी अ लिटिल लिबरल. Vice versa can also happen. I'm not trying to create any category or any fear in your mind, but there are people who are very, very, particular about what they would want in the essay. They are very aggressive in ensuring that there should be no grammatical error, the language use should be proper, it should be influential, no lurid remarks should be there, right? So you have to ensure that you are showing that skill set while you are writing an essay, right? So a well-structured essay will tremendously increase the understanding of the grader and make it easy for him or her to understand. तो स्ट्रक्चर के लिए इसलिए आई ऑलवेज इंश्योर दैट आई गिव अ टेम्पलेट. एट टाइम्स लॉट ऑफ माय कंटेम्पररीज टेल मी दैट it's spoon feeding the students to give them the structure, right? But I feel that even if it is spoon feeding and my students are getting benefited from it, then my job is sorted, right? So yes, if you feel you're comfortable and you can do justice to the structure, do it. And I always tell it to my students that you can experiment, you can tweak the approach, you can explore, you can have your own ideas, but you need to ensure that it clicks to the grader. That's the most important thing. It is convincing. If it is not convincing, then it doesn't work, right? There are certain films, I'm not offending anybody, but there are certain films जो graders, जो directors बनाते हैं. मैं बार बार आपको films का example देती हूँ because relatable है, right? तो इतनी intense films बना देते हैं कि एक common audience उससे relate नहीं कर पाता, तो उसकी सक्सेस नहीं हो पाती, राइट? तो हमें तो एक बैलेंस और रैशनल तरीका बताना है. समथिंग लाइक अ राजकुमार हिरानी फिल्म, दैट इट इज एंटरटेनिंग बट इट इज स्टिल गिविंग यू अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, राइट? सो आई होप आई एम एबल टू create an analogy in your mind, and I hope I am able to give you some sense regarding the same, right? So this is very very important. Structure important है. बिखरा हुआ आर्ग्यूमेंट किसी को नहीं समझ में आएगा, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कोजेंस. तो आपको अपनी आर्ग्यूमेंट को कन्विंसिंग बनाना है, राइट? वो कन्विंसिंग तब बनेगी जब आप एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन दोगे, राइट? आप उसके इंटेलेक्ट के साथ कनेक्ट करोगे, राइट? अब इफ आई टेल यू हाउ मेनी ऑफ यू वॉच नागिन, आप कहोगे मैम क्या क्या बात कर रहे हो मैम, कौन देखता है नागिन, राइट? बट लोग से देखते हैं, आप देखते हो तो इट्स ओके, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या कुछ भी होता है इसमें, राइट? सो कुछ भी हो रहा है, अगर क्लैरिटी नहीं आ रही, ऑथर कन्विंस नहीं हो पा रहा, परसुएसिव नहीं है आपकी आर्गुमेंट. परसुएसिव का मतलब परसुएशन से वर्ड बना है, दैट यू हैव दैट एडिक्वेट
points in your kitty, in your essay, that are creating a long lasting impact, which is very very important, right? So despite structure है आपके पास, आप flow maintain कर रहे हो, पर आपके point strong नहीं है, तो of course effectiveness would not come. Transitions is very important. Switching, right? It should be जैसे मोती की माला पिरोई होती है ना, राइट? अगर कोई मोती कम है तो वो टूटी फूटी सी माला तो कोई नहीं पहनेगा. सिमिलरली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक द आइडियाज. इंस्टेंट स्विचिंग नहीं लगना चाहिए, ये पॉइंट आया फिर ये आया फिर ये आया. इट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज यू आर राइटिंग वन एसे. सो essay has to have all the paragraphs interconnected, right? तो smooth transitions के लिए आप जरूर से ये words को include करो. ये मैं I'm a big supporter of including transitions in the essays. And I always say that, even when you're doing RCs, fill in the blanks, critical reasoning, please observe these words, right? Very crucial, very important. So this is the list. You can read the list. You are aware of all these words, so this will help you understand how to use them and what are the words that you can use. So take a minute and read this very nicely. If you want, you can take additional 1 more minute to pen it down. So I give you 2 minutes to read and to write the words that you think will be important, you can use. Read it nicely. Just relate in your minds how and where you are going to use the words. You have the template with you, right? So कैन सी वेयर वुड यू प्लेस, मतलब जहां आपने दूसरा बॉडी पैराग्राफ यूज किया वहां मोर ओवर यूज कर सकते हो, राइट? या फर्दर मोर यूज कर सकते हो. और मे बी जहां पर आप एग्जाम्पल दे रहे हो वहां पे इलास्ट्रेशन वाला पॉइंट यूज कर सकते हो, वो वाला ट्रांजिशन यूज कर सकते हो. सो यू कैन सी वेयर ऑल व्हाट ऑल पॉइंट्स कैन बी इलाबोरेटेड, यूज्ड, डिटेल्ड, इनकॉर्पोरेटेड, राइट? सो दैट you can imagine. So you have some more words for you, clarification के लिए, identification के लिए, similarity reflect करने के लिए, reference देने के लिए. What are the words? So again, take a minute, read these, and take another minute to write them. I'm sure you have noted the words.
let's see what's the next point. So next point is clarity of thoughts, right? So there should be clear, has clear direction the way ideas are floating, right? So a long winded discussion जहाँ पे आपका कोई clear thesis नहीं है या analysis नहीं है, वो big turn off in GRE essays होता है, GMAT essays होता है, या जहाँ भी ऐसे essays tested होते हैं, तो very important कि clarity of thought, दैट इज द रीजन हम टाइम एलोकेशन में कहते हैं कि 6 से 8 मिनट का इन्वेस्टमेंट कर दो, राइट? सो इट शुड बी हेडिंग टूवर्ड्स समथिंग, इट शुड नॉट कम लाइक कि कहीं डायरेक्शन लेस कहानी जा रही है, कोई पॉइंट तक पहुंच नहीं रहे, रेपिटेशन ऑफ आइडियाज हो रहे हैं, स्टूडेंट को ही नहीं पता कि वो क्या लिखना चाह रहा है, राइट? सो नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट शुड बी given as an impression to the grader, right? So the ideas should be, not loosely linked. It should not be that there is no connection, no intertwined thought. It should be shown like this, that the ideas have great connection and, great impression. Next, organization will definitely help, right? So start with the most effective idea and come to the least effective one, right? So maybe you can write the bullet points so that you can build on this. You can keep these pointers in mind while you are writing your own essay, right? And this is for general instructions, and it's not only for argument based essay, but for any issue based essay also. These are the points that you need to take care of, that you need to be aware of, and you need not to make these mistakes. So I'm sure you have noted the bullet points and you're going to keep these in mind. Don't make spelling mistakes and grammatical errors, right? This is something which every student should be aware of, that you cannot do at least these basic errors. So if you never thought of it, uh, if you never thought of it, maybe we can just talk about these points, right? Don't make the errors of subject verb agreement, right? If the subject is singular, the verb is going to be singular. Don't make pronoun errors. What are pronoun errors? That for plural terms you are using a singular noun, or for a singular term you are using a plural pronoun. Don't do that. Don't make tenses ka errors. They are very closely checked. So at least these three mistakes are expected that you are not going to make, right? So pronouns should be clear, tenses should be used, right? Subject verb agreement, it's written also. So please ensure that you're not making these mistakes. Now when you're writing the essays, you're doing it professionally, right? So don't include any sarcasm, any joke, any rhetorical discussion, right? Don't ask questions. At times students ask this question, that do you agree with this? Nobody is popping outside to give you an answer, right? So don't do that. That style of writing requires tremendous skill set, which as beginners or as students we usually don't have, right? Also, please use varied sentence structure. Varied sentence structure means don't drag the sentences to be too long, right? At times we students have written the entire paragraph using one sentence, never ending sentence. So if you're making such a long sentence, then the grader is going to lose the crux. He's going to lose focus, that what did you try to communicate. Don't write very short and very quick sentences also, because then that also doesn't help establish the rhythm.
So ensure that the essay you're writing has a mixed, sentence structure. Some sentences going long, some sentences coming out to be short. Appropriate length is very important, right? So please ensure that you're doing so. And when it comes to the number of lines, so introduction can have 4 to 5 lines, right? 4 to 5 lines. Now your body paragraphs, right? If I talk about, then sorry, just give me a minute. Yeah, so you talk about body paras, so they should have somewhere around 7 to 10 lines, right? And so it is 3, so 3 into 7, if we average talk about, so 210 words, right? Somewhere around 50 words here, right? And your conclusion can have 2 to 3 lines, right? So a good length of the essay would be somewhere between 250 to 300 words, right? Less than 250 words shows that you have scarcity of ideas. More than 300 words, it becomes monotonous. People are usually not interested, right? So I think we have covered everything in this particular session. So I hope you found the video useful. Please do implement these steps and do a lot of practice. Ensure that you write at least 3 to 5 essays before writing the main one in the exam, and don't forget consistency is the key. Thank you so much for watching the video. Please take care.